So let's start with Banknifty 3 minutes. What very easy day today. No volumes in the morning, so that becomes a little worrisome. What I did today was basically, if you in the first half I didn't really give a trade, but my trade was basically in the first half in Banknifty. Why? Because this was my reference of Banknifty trade. I was looking for a short around 11 o'clock, 10:45, and my exit was around after 1 o'clock. So stop loss, of course, day high. Now if you look at this chart, 3 minute chart, so we're looking for an entry around 11 o'clock. So this was my entry where this consolidation was happening. My stop loss was day high, and I exited some here, and I waited for some to exit after 1 o'clock when a new low was made. I in the chat also, TradingView chat also, somebody had posted a Bank Nifty short. I did acknowledge that trade because I was also in the same trade but different view. This was my view, which I usually don't share in the morning. What I shared in the morning, in the afternoon, was that if 130 is not making a new low, I'll look for a short. But 130 was making a new low, so I didn't really want a short. So if you look at this, after 130 close, it didn't really give you any short. It reversed. That is the reason I didn't really want a short if it was making a new low. So this was not a trade for me today. Nifty, as I said, no trade, so I didn't, and there were no volumes also, so wasn't really interested in trading Nifty. Coming to positional, same has been doing same thing for the last 1 week. In that zone, goes up, comes back, goes up, comes back. Still haven't received any good closing below short level, or good closing above a buy level, so not trading positionally. बैंक निफ्टी 3 मिनट में देखते हैं, तो मैंने ये ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन किसी ने ट्रेडिंग में डाला था कि वो शॉर्ट है, तो मैंने उसको एक्नॉलेज किया था क्योंकि मेरा सिस्टम में शॉर्ट आया था अराउंड 10, साढ़े 10, 10:45, 11 o'clock के आसपास. मॉर्निंग ट्रेड में यूजली शेयर नहीं करता. 10:45, 11 के आसपास जो आया था, एग्जिट था 1 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद. ये है चार्ट 15 मिनट का. कहाँ पर एंट्री की मैंने? यहाँ पर. क्यों? क्योंकि यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया था और मुझे भी एक एंट्री मिल रही थी 11 o'clock के आसपास. स्टॉप लॉस रहता डे हाई. मैंने कुछ एग्जिट किए यहाँ पर, कुछ 1 बजे के बाद. और जो मेरा ये था, क्या कहते हैं, कोई वॉल्यूम्स तो था नहीं आज बैंक निफ्टी में, तो वो एक थोड़ा सरप्राइजिंग था. एक चीज़ था कि निफ्टी में जो मैंने ट्रेड दिया था दोपहर को, वो ट्रिगर नहीं हुआ. तो मैंने बोला था कि 130 के नीचे मैं सेल करूँगा, और अगर 130 नया लो नहीं बना रहा है, 130 नया लो बना रहा था, इसलिए मैं जो सेल नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता था या फिर ये रिवर्स होगा या फिर ये साइडवेज रहेगा. तो वही हुआ. और निफ्टी में भी कोई वॉल्यूम्स नहीं थे आज अच्छे. पोजिशनली आप देखें तो लास्ट 1 हफ्ते से ये इसी बॉक्स में घूम रहे हैं. एक बार गया था नीचे पर, फिर रिलायंस और ICICI बैंक का रिजल्ट आया था, उसकी वजह से वापस आ गया था ऊपर. आज बॉक्स का टॉप हाई टच किया उसने, और वहाँ से फिर सेलिंग आई है. कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और थर्सडे को छुट्टी है. उसके बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक बजट है. तो देखते हैं कैसे कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फिर इस हफ्ते में सिर्फ फ्राइडे बचेगा ट्रेडिंग डे के लिए. तो कल की क्लोजिंग देखते हैं कैसे होती है. और बस यही. थैंक यू.